Assalamualaikum, welcome to our YouTube channel. I'm back with a brand new video and I really hope that you guys will enjoy it. As the title indicates, in this video we'll be making a 3D human heart working model and ये actually हमने आइला की assignment के लिए बनाया था, but I thought कि it will be useful for you guys, especially for those who are interested in model making. So make sure to watch this video till the end because ये आपके लिए बहुत useful होने वाली है. This is a heads up that both Ayla and me are not professionals, but we still wanted to share our experience with you guys. That's why हमने वीडियो में बहुत सी tips and tricks share किए हैं. So make sure to not skip this video because each and every step can either make or break your model. Please, without wasting any more time, let's get into the model making. Okay, you guys, as you already know कि किसी भी project के लिए first part होता है supplies. So these are the supplies I got for our model. So देखते हैं कि मैंने क्या buy किया है. Actually guys, Ayla के पास only 3 days थे to complete her model. That's why we got all the supplies on the first day. I would recommend कि आप भी पहले ही supplies ले आएं ताकि आपको बाद में कोई tension ना हो और अगर आपको कुछ available ना हो तो आप easily उसका alternative भी decide कर पाएं. So the first thing I got is this paper knife. ये मुझे easily available हो गई थी. I used it to cut the foam and other things. You can see it's working. अगर हम pink part को open करते हैं then it will not move. लेकिन जैसे ही हम close करते हैं we can change its position. So now let's move on. The next thing I got are these two paint brushes. The first one is this wide range one and the second one is this narrow range one for the details on the model. If you already have all these stuff at home then आपको new buy करने की कोई ज़रूरत नहीं है because मेरे पास थी नहीं. That's why I bought all these supplies. Okay, the third thing I bought is this glue. आप कोई भी glue buy कर सकते हैं. मुझे यही available थी. That's why I bought it. So the next thing I bought are these paints. I only bought the essential ones. So moving on, the fifth thing on the list is this masking tape. I ended up using about 3 of them. So make sure कि आपके supplies आपके model के size के according हो. Next thing I got is this super glue or magic. मुझे एक strong glue चाहिए थी to attach the syringes with the blood tubing set. So मैंने ये choose की. All these 6 items were from a stationery store. But these things are from a clinic. I think so you can easily get them at a pharmacy too. So the next thing I bought are these syringes. These are 10 ml syringes. I bought 8 but I only used 4. मैंने spare इसलिए buy की थी just in case I end up damaging one in the process. So the next thing I got are these IV sets or blood tubing sets. I only 2 use किए थे but I got 4 for the same reason. But anyways, moving on, let's see the 9th item on the list. This is cotton. ये मेरे घर में पहले से available थी but I thought कि maybe वो enough ना हो. That's why I bought extra. Anyways, the last item on the list is this foam. Actually मुझे foam sheet चाहिए थी but even after searching at countless shops मुझे वो नहीं मिली. That's why I had to make do with this one. I would recommend कि आप foam sheet ही use करें because it's easier to work with. Anyways, now let's move on to the next segment of our model making, which is the development of the heart structure. Bismillahirrahmanirrahim. So let's get started. First step is to measure the foam piece because हमने इसी foam piece से platform भी बनाना है and heart का base भी बनाना है. So we have to equally divide it. So first Ayla ने foam piece को measure किया. In our case the width of the piece was 96.5. So उसके बाद हमने उसे equally divide किया and lengthwise cut कर दिया. Do make sure कि आप measurements correctly लें and आपका जो foam piece है उसके according equally उसे divide कर दें. As I previously mentioned कि आप foam sheet को prefer करें इस foam material को ना करें because it's not very efficient to work with. But in some cases अगर आप हमारी तरह unlucky हुए and you do end up with the same material as I would recommend that you should not get discouraged. You should remain optimistic because it's okay. आपके पास बस एक अच्छी paper knife होनी चाहिए and you should remain careful while dealing with this material. Then inshallah your model will turn out great. A few minutes later. Now the second step is to divide each piece into 3 other equal individual pieces.
सो फर्स्ट मैंने एक पीस को सिलेक्ट किया और उसे 3 इंडिविजुअल पीसेस में कट कर दिया. इन माई केस the length of each piece was 12 inches. So now the plan is to stack all these 3 pieces together on top of each other to make the base of the heart. So without further ado, let's get started. मैंने first एक piece को select किया और उसे cover किया glue के साथ. And right here I made a small mistake. I'm telling you guys ताकि आप भी ये mistake ना करें. So I thought कि maybe base तो सबसे strong होनी चाहिए ना. So I had the idea कि I should use strong glue for this part. So I used this glue. Now you can't spot anything wrong, but slowly the glue started to penetrate into the foam due to a reaction. So I rejected this plan and used the same glue that I showed you in the supplies to join all these pieces together. Please make sure कि आप ज़्यादा glue middle part में apply करें because during carving the side parts will be removed. उसके बाद मैंने second piece attach कर दिया and gently press किया ताकि दोनों parts अच्छे से stick हो जाएं. Here Ayla got the idea कि maybe ये glue इतनी ज़्यादा strong ना हो, so we should use these skewers to hold all these 3 parts together. Make sure कि आपके skewers की length इतनी हो कि वो foam से बाहर penetrate ना हो. As I said before कि middle part पे ज़्यादा focus होना चाहिए, so we inserted these skewers into the middle part. बाय द वे मैंने पहले ही ग्लू अप्लाई कर दी थी सेकेंड पार्ट पर, बट मेक श्योर कि आप स्क्यूवर्स इंसर्ट करने के बाद ही अप्लाई करें ग्लू. एंड देन फाइनली हमने थर्ड पीस को ऊपर स्टैक कर दिया था, बट यहाँ पर एक स्लाइट मिसकैलकुलेशन की वजह से वो स्क्यूवर्स पेनिट्रेट हो रहे थे, बट वी टुक केयर ऑफ इट. सो मेक श्योर कि आपसे ये मिस्टेक ना हो. A few inches later. Fast forward, we gave the foam pieces a good 30 minutes rest. In the meanwhile, मैंने ये sketch prepare कर लिया था heart के लिए. मैंने ये sketch इसलिए choose किया because I thought that it was suitable for Ayla's level. So what we need to do next is to sketch it directly on the foam sheet क्योंकि उसी से हमने carving भी करनी है ना. So अभी मैंने एक sketch कर लिया है foam sheet के ऊपर and the next step is to carve it. Regardless of the material used, I believe carving is the most difficult step. So what we need to do is to be really careful and remember, haste makes waste. 6.5 hours later. Alhamdulillah, I'm done with the basic carving. So अभी मैंने आपको बताना था कि मैंने same paper knife use किया है as I showed you in the supplies. And उसके साथ what you have to do is to be again really patient, really careful, and then आपकी भी carving inshallah excellent होगी. So now the next step is to make the detailing. We have to make each and every part of the heart like the atria, ventricles, aorta, pulmonary trunk, everything look prominent and separate. One eternity later. Hello again. So as you can already see, the model is looking very nice because of the detailing. You can easily distinguish each and every part of the heart. But still अभी काफ़ी steps remaining हैं. Anyways, the detailing is now complete and ये मैंने paper knife की through की थी. But again, the key is to remain calm and composed ताकि each detail आप smoothly carry out कर सकें. Up till now, we first created the base of the heart, then we carved it, afterwards we covered it with masking tape, and now the next step is to create texture on the heart. Day 2. This is the second day of our model making. I'm pretty sure you guys must be confused कि fast forward ये हो क्या गया है, but एक्चुअली रीज़न ये था कि आयला और मैं काफ़ी बिजी थे, सो वी couldn't really record the process, बट मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको कोई इशू ना हो. सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट डे, हमने हार्ट को मास्किंग टेप से कवर किया था, राइट. उसके बाद हमने क्या किया, हमने मास्किंग टेप के ऊपर हार्ट को फुली ग्लू से कोट किया. सो द नेक्स्ट थिंग वी डिड वाज वी टुक थिन लेयर्स ऑफ कॉटन. एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी एक रोल की फॉर्म में कॉटन अवेलेबल थी. मैंने उसमें से थिन लेयर्स ऑफ कॉटन को लिया एंड ऊपर कोट कर दिया. आई रिपीट, थिन लेयर ऑफ कॉटन लेनी है आप लोगों ने. So after applying the thin layer of cotton all over the heart, what we did next was create a dilute solution of any glue.
To make that solution आपको क्या चाहिए, आपको कुछ ग्लू चाहिए, कुछ अमाउंट में ग्लू एंड आपको सेम अमाउंट में वाटर चाहिए। उन दोनों को आपने मिक्स करना है। उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से आपने उस मिक्सचर को लाइटली डैप करना है कॉटन के ऊपर। वी वॉन्ट टू डू दिस टू क्रिएट टेक्सचर ऑन द हार्ट, टू मेक इट एज सिमिलर एज पॉसिबल टू द रियल थिंग। आई रिपीट, आपने ब्रश से सिर्फ स्लाइट सा मिक्सचर अप्लाई करना है। अगर आपने ज़्यादा मिक्सचर अप्लाई कर दिया, द कॉटन वोंट स्टिक, इट विल स्टार्ट कमिंग ऑफ। सो आई रिपीट, आपने सिर्फ थोड़ा सा मिक्सचर अप्लाई करना है, ज़्यादा नहीं करना। आफ्टरवर्ड्स लास्टली आपने इसे ड्राई करना है। इन माई केस मैंने इसे ओवरनाइट ड्राई किया था एंड मॉर्निंग में ये रिजल्ट मेरे सामने आया था जो आप देख रहे हैं। So this is what happened. I really hope आपको समझ आ गया होगा, but still if you have any queries you can ask in the comment section. I'll inshallah reply. So the last part of this segment of making the heart structure is to paint the heart. So अभी मैं paint करना start करती हूँ और आपसे कुछ देर बाद मिलेंगे। So what you're seeing on the screen right now are the pulmonary arteries, pulmonary veins and some other common arteries which we have to attach on the outside of the heart. In order to make them, मैंने फोम पीसेस को सिलेंड्रिकल शेप में कट किया। उसके बाद उन्हें कवर किया विद मास्किंग टेप एंड आफ्टरवर्ड्स उन्हें पेंट किया एंड ड्राई कर दिया। सो दिस इज हाउ आई क्रिएटेड देम एंड मैं इन्हें मेटल वायर से अटैच करूंगी। Day 3. So this is the third day of our model making. As you can see, the coloring, painting is finished. All the detailing is also finished and it took about the whole day and overnight पर मैंने उसे ड्राई किया। In my spare time, I also created the platform as you can see. And actually आपको याद होगा start में we had an extra foam piece. So मैंने उस foam piece को individual 3 pieces में divide किया 12 inches each. and उनमें से 2 pieces को use करके इस platform को create किया। I finished it with covering with a heart chart. and मैंने ये black use किया था because I thought it looked good. and afterwards मैंने एक ट्यूब जो आप देख सकते हैं, ये ब्लू ट्यूब, दिस इज द inferior vena cava, इसे मैंने इंसर्ट किया प्लेटफॉर्म में थ्रू मेटल वायर्स एंड द सेम मेटल वायर्स वर यूज्ड टू अटैच द हार्ट ऑन टॉप ऑफ द inferior vena cava. बिकॉज हार्ट काफ़ी हैवी था, दैट्स वाई वो फुली सपोर्ट नहीं हो रहा था ऑन टॉप ऑफ द inferior vena cava. So what I did was I took about 5 skewers, I painted them black. Afterwards I took each skewer and inserted them from the back of the platform and into the heart. I continued this for every skewer. I think so about 5 of them were inserted to make the heart somewhat supported on the inferior vena cava. अभी तक मैंने वो pulmonary veins and pulmonary arteries अभी तक attach नहीं की, but I'll attach them in some while with the same metal wires. So as you can see, alhamdulillah, our model is complete. Each and every detail is already integrated into the model. आप ध्यान से देख लें कि क्या मैंने डिटेलिंग किया, बट जस्ट इट्स पेंटिंग। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने डिज़ाइन एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसे क्रिएट करें, रिफाइन करें, बट मेक श्योर आपके पास एक स्पेसिफिक थीम है, आइडिया है, विजुअलाइजेशन है कि आपका मॉडल कैसा होगा, बिकॉज दीज आर द मेन एसेंशियल प्री रिक्वेजिट्स बिफोर स्टार्टिंग टू मेक अ मॉडल. I'm really sorry. Now our structure of the model is finally complete. I have attached the pulmonary veins, the pulmonary arteries and also the other essential arteries. So this was the end of our segment of model structure. So now let's move on to the third segment of our model making, which is the working of the heart. Because just in case you forgot, this is a 3D human heart working model. First of all, the model turned out very nice, mashallah. It's a solid 10 out of 10 from my side. Now let me show you guys the working of this model. First of all, हम gently syringe को push करेंगे and in this way blood starts to flow in the blood vessels and is transferred to the adjacent syringe. This is the deoxygenated blood and in the same way we have another set of syringes representing the oxygenated blood colored red. So now let me explain you guys how you achieve this working. So first हमने 4 syringes लेनी है and उन syringes की needles को remove करना है. Afterwards we take 2 IV sets or blood tubing sets, whatever you call them, and उनके ends को remove करना है to get only the plastic wires.
So now the second step is to attach the syringes with the plastic tubes. So to do this we have to use a strong glue or magic. मैंने magic use की थी, आप कोई भी strong glue use कर सकते हैं. Also please don't slack off at this part because ये आपकी model की working का सबसे important part है. Afterwards आपने उसे dry करना है and the next step is to attach these syringes onto the platform and ये आप metal wires के through कर सकते हैं जैसे मैंने किया था. Okay, so the second last step of this model working was to attach the plastic tubes onto the heart to create a network of blood vessels. मैंने ये अटैच की थी थ्रू मेटल वायर्स एंड आप अपनी ट्यूब्स की लेंथ के अकॉर्डिंग नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, पर आई थॉट कि मेरे मॉडल पे ये सबसे बेस्ट लग रहा है, सो आई ऑप्टेड फॉर देम एंड एक्चुअली बी रियली केयरफुल इन दिस पार्ट बिकॉज the structure of the heart is now complete and we can't really afford any more mistakes because model बिल्कुल finish होने वाला है. The last step of our model working is to insert the liquid, aka the blood, into the syringes. Maybe I was a bit burned out from all this model activity for the past 3 days. So मुझे बिल्कुल भूल गया कि syringes का back part remove हो सकता है. And what I did was after removing the needle from each syringe and before attaching the blood tubes onto them I inserted each liquid into the syringe. But आपको कोई inconvenience ना हो, that's why मैं आपको याद करवा देती हूँ कि the back side of each syringe can be removed, so आप तब easily उसमें liquid add कर सकते हैं using a spare syringe or any other tool you have. But I would recommend कि platform में attach करने से पहले ही आप syringe में blood और liquid fill कर दें. Also ये blue blood aka the deoxygenated blood मैंने create किया था after mixing blue paint with water and red blood create किया था obviously by mixing red paint with water, लेकिन आप food coloring भी I think so use कर सकते हैं. Anyways, this was all for the model working. Now officially our model is complete. अब आपने क्या करना है, आपने टैग्स अटैच करने हैं, फ्लैश कार्ड्स अटैच करने हैं प्लेटफॉर्म पे to make the model look more and more amazing and pleasing to the eye. So अभी आप देख सकते हैं I use small tags to highlight each and every part of the heart and मैंने फ्लैश कार्ड्स अटैच किए थे for the abbreviations of these tags on the platform. And now let's talk about this model for a bit. आपको इस मॉडल पर एक weird ब्लैक से स्पॉट नज़र आ रहा होगा ना राइट ऑन द लेफ्ट वेंट्रिकल, आप इजीली उसे स्पॉट कर सकते हैं अभी. सो दिस इज व्हाट आई एडेड ऑन माय मॉडल टू मेक इट अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर नॉर्मल हार्ट मॉडल्स. So what I did here was actually I created a blockage in one of the heart arteries on the left ventricle. So this blockage or vasoconstriction actually led to the phenomena where the surrounding cardiac muscles started to die because उन्हें enough oxygen supply नहीं हो रहा था because blood block हो गया था. So this eventually led to the phenomena of heart attack or myocardial infarction because the heart muscles started to die. I'm pretty sure you guys have already guessed it, but yes, the message or the theme of my model is global heart health. Anyone who sees this model will pretty sure review their own lifestyle to see if he or she is doing anything that will cause their heart to become like this in the future. So actually ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, but still I tried my very best to create a useful video for you guys. So I really hope that you guys have enjoyed it and learned a lot from this video. But still, if you have any question, do comment below. So till the next video, take care and Allah Hafiz. Also don't forget to like, subscribe and follow for more.